JK Dairy is one of the pioneers in Pakistan in dairy industry. Started in 2006. It is located in Rahim Yar Khan. My name is Abdul Sattar Chaudhary. I am General Manager of JK Dairies. We have total 3,000 herd. Currently we are milking 1,300 cows and we are producing approximately 39 tons liter per day. Our target is to get from these cows on an average above 30 liters around the year. We have here another facility with us that we are processing our own milk, raw milk direct from milking parlors to the processing area and then going in the market as a fresh raw milk. We are focusing on the improvement of our production and genetics. We start using NADEP 2 years back. I personally feel if you introduce any technology, it should be in a full shape. इस सिस्टम से पहले हम विजुअल हीट डिटेक्शन करते थे और इसके अंदर लेबर ज़्यादा लगाने पड़ती थी और इस सिस्टम लगाने के बाद अब हमें मोबाइल हीट अलर्ट आ जाते हैं और ये इनकी ऑप्टिमम टाइम भी बता देता है, हम उसके ज़रिए इंसेमिनेशन कर देते हैं। इस सिस्टम के इस्तेमाल से हमारे एनिमल का कंसेप्शन रेट बहुत बेहतर हो गया। मेरा नाम डॉक्टर इजहार अली है। मैं जेके डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड पे हार्ड मैनेजर हूँ। नेडाप ओवरलोड की टेक्निकल टीम हमारे पास आई थी और उन्होंने हमें इसके बारे में तफसील से बताया। उसके बाद हमने अपनी हायर मैनेजमेंट से डिस्कस किया और अपने फार्म पे इसको इंट्रोड्यूस किया। बीइंग ए वेटनेरियन, हम जानवर का उस वक्त इलाज कर सकते हैं जब वो क्लिनिकल साइन शो करे और ये सिस्टम हमें जानवर के बीमार होने से 2 से 3 दिन पहले अलर्ट दे देता है और जिससे हमें मेडिकल कॉस्ट भी बचती है और एनिमल एक्सपायर होने से भी बच जाता है। इट इज हेल्पिंग द पीपल to identify early detection of sick animals. Might be a mastitis, metritis, lameness, any metabolic disorder. So when you receive any health alert from the NADEP cow control system, your team can easily identify the animals. एनिमल का सबसे क्रिटिकल टाइम काविंग के बाद होता है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाते हैं एनिमल को, जिसमें केटोसिस है, मिल्क फीवर है। ये उनके अंदर भी हमारी हेल्प करता है। गर्मियों में हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और इससे पहले हमें अपने शेड्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे सिक एनिमल को पिक करने के लिए। इस सिस्टम के बाद मुझे एनिमल को चेक करने के लिए बाहर में नहीं जाना पड़ता। मैं ऑफिस में हूँ या बाहर हूँ तो मैं अपने मोबाइल से अलर्ट चेक कर लेता हूँ। इट हैज़ गिवन अस वेरी गुड कॉन्फिडेंस टू हैव द डेटा। फीड मैनेजमेंट में हमें इसकी काफ़ी मदद मिली है क्योंकि ये एनिमल के नॉर्मल जो 24 आवर की एक्टिविटी है उसको विजुलाइज करता है। इसके अंदर इनटेक टाइम है, इसकी रूमिनेशन है और इनएक्टिव टाइम है। जब एनिमल अगर इनटेक कम करता है तो ये भी उसके अलर्ट्स देता है। इनएक्टिव टाइम इंक्रीज कर रहा है फिर भी अलर्ट्स दे रहा है और ये ओवरऑल हार्ड का ग्राफ भी दे रहा होता है। कोई अगर मैनेजमेंट में हम चेंज करते हैं तो वो ग्राफ भी हमें शो कर रहा होता है कि यार आपके 2-3 दिन का ग्राफ ऊपर गया है या नीचे गया है। ह्यूमन रिसोर्स की एफिकेसी को इंक्रीज करता है और लेबर मैनेजमेंट में भी हमें मदद कर रहा है। मैं बाकी डेयरी फार्मर्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि नेडाप ओवरलोड सिस्टम लगाएं, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इफ़ यू हैव ए वेल मैनेज्ड सिस्टम, यू कैन मल्टीप्लाई योर हर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
dairy farm in the private sector.